Good morning. Be seated. Good morning. Thank you. Hi Nitish, please introduce yourself. Sir, my name is Nitish Kumar Maurya. I am from Ayodhya, Uttar Pradesh. I have done my schooling from Ayodhya itself, and after that I did BTech in Electrical Engineering from NIT Allahabad in 2022, and after that I am preparing for the engineering services. So why you choose electrical engineering? Sir, in my class 11th and 12th, I like more about the current electricity, electrostats and all. And I was much interested towards the knowing what is further which I can learn in the electrical field. So that's why I took the electrical engineering. You mentioned class 11, but I guess in class 11 syllabus, there is not much syllabus of electricity or magnetism. All those topics are in class 11th or 12th? Sir, mainly it is in class 12th, sir. Okay. How many districts are there in Uttar Pradesh? Sir, there are 75 districts in Uttar Pradesh. And which is the largest according to area? Sir, sorry sir, I'm not sure. Okay. Nitish, your father is a farmer Yes, sir. and your mother is also helping in it? Yes, sir. Then my question to you, I have a big doubt here that you have entered that your father's income is 50,000. Yes, That sir. will be from agriculture. Yes, sir. And your mother is also helping, then why you put 0 on your mother's income? If she is also helping, then it should be either 50-50 or there might be some ratio. Yes, sir. That should be, sir. You have not mentioned that. But sir, the income certificate which is issued by the revenue officer, in that, sir, it is written like, sir, income from the fathers, sir. So So that's, revenue officer has not written up without your family's consent. sir, officially it is written. That's why I have write it as. Okay. In Uttar Pradesh, Yes. in last few years, the many places name has been changed, like from Allahabad to Prayagraj. Yes. So what is the reason behind that? And according to your opinion, it is good or not good? Sir, the name which is changed, the district name which is changed, sir, initially the district was called by that name only, like, sir, Faizabad was known by the Ayodhya, so that's why it has been changed to do about our ancient culture and all. Okay. Your hobbies is watching and playing cricket. Yes, sir. In cricket, in last 3 years, it has been observed that some of the test matches are played in night with pink ball. So how this pink ball is different from the red and white ball? Sorry, sir, I'm not aware. Okay. What is the difference between spin and swing? Sir, spin is mainly when ball is tilted when it touches the ground, and swing is when ball is tilted into the air itself, sir. So you means to say that swing will be before the ball tips and spin will be after it touches the ground. No, sir, it is when it comes to the batsman. But sir, spin is when it touches to the ground, then only it tilted to some other direction. But sir, swing is when it tilted into the air itself, sir. Okay. You must have been seen Hawkeye and the deviation of a spin bowler. Yes, sir. Okay, the original trajectory is this and the ball is leg spin and the deviation is this much angle. Yes, sir. So that angle is how much? 90 degree, 50 degree, or it is, what is the approximate range of that angle by which a spinner spins the ball? 30 degree, 40 degree, 2 degree, 1 degree, 0.1 degree, how much? Sir, when bowler throw the ball, After it landed on the ground, yes, sir. if you see the original trajectory, that will be somewhere else. Yes, But sir. after it spins, the trajectory change. Yes. So what is that deviation? What is the range of that deviation for a international spinner? Sir, not sir, I don't know exactly, but sir, it will not be more than, sir, 15 degree. Okay. Yes. And when the third umpire has came in the picture in Yes. the international cricket, Yes. so which international player was the first one who was dismissed, run out by the means of third umpire? Sorry, sir, not aware. Okay. Nitesh,
in recent years, there are more encounters in Uttar Pradesh than ever before. Yes, sir. Particularly if I say when the new government has came. Yes, sir. So is it good for law or it is not good? According to you? Sir, I think, sir, encounter is not a way to force the law and order into the state. Sir, it should be more tilted towards the judiciary system. And sir, but sir, for some particular criminals, it is also required, sir. So It is required. So no Sir- court, no judgment, no lawyer, no judge, direct shoot them. no, sir. I initially said that judgment should be there. Like we should be more focused towards the judicial system, not like this encounter and all. But you mentioned that for some criminals it is good. Sir, in some cases, like when they are doing something to the police forces, and in that cases, sir. Okay. Now my last question to you. Suppose you became an IAS officer Yes, sir. and somebody is giving you bribe. Take this 50,000 rupees and you have to do this work, which is not appropriate as per the government policies. Yeah. But that quality of work is good. That contractor is only saying that I will give the best quality of material and the work, but only condition is that you take 50,000 from me and give the contract only to me, but he, quality wise, he is doing the good work. Then what you do in that case? Sir, first of all, I will follow whatever the government regulation I have to follow. So accordingly, that only I will do the work, sir. Suppose there are 5 contractors, Yes, sir. okay? You have to give the tender to any one of the contractor. Usually there is e-tendering, but might be for that special case, e-tendering was not there and you are the whole sole responsibility, you can give the tender to any of those 5 contractors. Yes, sir. The 5 contractor names were A, B, C, D, E. Okay? Yes, sir. Out of these 5 contractors, the contractor A is providing the best quality and you have seen the history. Yes. But the contractor A wants to give you 50,000 rupees as a gift, as a donation, as a something, and he's saying that, sir, this is from my side, please give this contract to me. Now, if you are not giving to contract to him, you are giving to B, C, D, E. The quality of B, C, D is not good that you get from the history books. So, in that case, what you will be doing? You will be giving the contract to other 4, but the quality of A is good. Who is giving you 50,000 also? You can think as a bribe, donation, gift, anything. Yes, sir. So, what you will do? Giving contract to A or any one of other 4? Sir, But the quality of A is the best. yes, sir. If person A, sir, he is giving the good quality and he has good record also. So, sir, I don't think he will allow some money to anyone, to any officer. But, sir, if he is doing good and he can do that work which is particularly doing by under me, so I will allow him. But there is no sense to take money, or I don't think he will do something like this. Okay. Nitish, one more question I would like to ask. When I move to highways now, Yes, sir. then the wires are sagged between 2 electric poles. Have you seen that? Yes, sir. Why that is sagged? Sir, it is provided for the mechanical purpose, and also, sir, SAG provides it increases the SIL loading of transmission line. Okay. Okay. Thank you, Nitish. Thank you. Nitish, how are you? Sir, I'm fine, sir. Ready to give answer to my questions? Yes, sir. Okay. Then. First of all, I want to ask you one question. Why we are having the single phase supply or 3-phase supply? Why not 2-phase or 4-phase, 5-phase? Sir, dealing with the more than 3 phase, it will be very complicated in terms of generation and in terms of the transmission and distribution also. And sir, the generation of 3 phase is very convenient, and also in 3-phase system we have more power generation. So that's why we use 3 phase, and for the single phase load we have the single phase transmission and distribution. Yes, sir. Okay. But we are using 48-phase supply for aluminum industries. Is it so? Sorry, sir. You have idea about aluminum industry? No, sir. We are giving 48-phase supply. How is it possible? Sir, we can generate more than 3 phases also,
So sir, in 48 I think we have the sir phase difference that will be 360 by 48 between each phases, and accordingly we will provide to the load. But sir, I am not aware about this 48 phases supply. Is it true or just Sir, wrong information? sir, I am not aware, sir. Not aware about it. Okay. Why we are having 50 hertz supply? Sir, since for 50 hertz supply for 2-pole machine, the speed of the rotor will be 3000, and sir, it is seen that for 3000 the efficiency of the turbine is maximum, sir, for 50 hertz as well as for 60 hertz. Sir. That's why we produce either for 50 hertz or for 60 hertz. 60 hertz supply. Now, that Ram Mandir is in news, right? Yes, sir. Give me answer. How Ram Mandir will help in economic development of Ayodhya? Sir, it will increase the tourism. So through tourism, the local people get benefited, and also, sir, it will promote the local foods and local culture of the particular place. And sir, also, sir, local industries will grow, and sir, farmers will also get benefited through it. Like sir, sugar cane is famous from the sir Ayodhya district. So sir, products from the sugar like gur and gajak, these things will help to the local peoples in earning of those people. And also sir, the investors will invest in that district since sir tourism is increasing in that place. So sir, these are the things. Your father is farmer. Yes sir. Yeah. Yes. Do you have interest in farming? Yes sir. Tell me what you are doing. How you are going to help your father? Sir, like whatever he do in the field, sir, I help in that only. Sir. That only. Yes. How you can use your technical knowledge in farming? So in farming, like through the technical knowledge, I can go for the soil checking, and sir, also I can have the solar panel through which I can for the irrigation purpose when electricity supply is not there through the grid. Then also if there is any kind of need for the irrigation, then I can have the irrigation through the solar panels. Are you using solar panel? Sir, currently not, but in future, sir. In future, or you are going to use? Okay. Now your hobby is diary writing. Yes. Yes, sir. So you are writing diary daily, weekly, or monthly? Sir, it is daily, but sometimes I don't write, sir, when I didn't get much time, sir. Daily. Your daily writing. Yes. Okay. Which type of contents? Sir, it's mainly about, sir, a strategy what I will do tomorrow and the major events which happens in my life day by day. Sir. Okay. So what are the benefits of diary writing? Sir, by diary writing, I am able to manage my time, and also, sir, I can precisely measure what are the wrong things, what are the wrong decisions which I have taken, and what the precaution I can took for that. And also for my daily work, what is the best appropriate strategy which I can follow, sir. Okay. Means before filling this DAF, Yes, sir. already you have written all these things in your diary. Yes, sir. Yeah. Yes. Means you have collected information about all the ministry, because you have chosen Central Electrical and Mechanical Engineering Services as first choice. Yes, sir. Why? Sir, as it was required to fill the preference, so, sir, I do research about the different departments. Also, sir, I talk to my seniors. Okay. Then I came to this decision that this will be, sir, my preference. Senior means what? 1 year senior, 2 years, or 4 years, or 5 years? Sir, some of my seniors working through the engineering services. Okay. So I talked to them. They told about this will be the preference. What is the right way to take decision? Sir, by taking suggestions from other who is already have the knowledge of that particular field. My dear friend, if simply they have the experience of 4 or 5 years, Yes, sir. how you can say you are getting the correct information? Sir, not correct, sir. Decision will be taken by me only, but I can take some information which is required to take that decision. Now, what is your favorite subject? Sir, power system, electrical machine, network and control system. Network and control system. Yes. Okay. What is the use of mesh analysis and nodal analysis? Sir, by mesh analysis, we can know the current through any particular element, and also, sir, voltage at particular node, and this same is done by the nodal analysis also. Is there any practical application?
Yes, sir. We do all the when we required to design a transmission line, then we use that all the elements as a element like transmission line is replaced by the R and inductor and resistance, and we do all the analysis through the KVL and KCL. Okay. Why transient occurs in circuit? Sir, transient occurs mainly due to the nature of the system. Since system oppose the whatever the we give the input, so initially the output is not as we required. So due to the nature of the system, initially transients occur. Nature of system means? Nature of system means system if system having what kind of elements and what is the arrangement of the elements. What is the use of spark plug in your vehicle? You heard about the spark plug we are using? Sorry, sir. Okay. So, spark plug works on which principle? Sir, I am not aware about, sir. Not aware about it. Okay, ma'am. Simply, you heard about the two-port network? Yes, sir. Yes. Yes. Then what is the use of hybrid parameters? Sir, hybrid parameters are also a two-port network, and sir, it is used to analyze any complicated network. Sir, by having the from the input side, if we know the information about voltage and current, then we can have the hybrid parameters, and after that for different voltage and current we can know what will be the response of that system. Now, tell me about the inductors. What are the uses of inductor? Practical uses. Sir, inductor is an element which opposes the change of the current, and sir, inductor is used to store the energy. When we are converting AC into DC, Yes. we are using inductor filters. Yes. Yes, sir. We are connecting inductor in series or in parallel. Sir, we connect inductor in series. Sir. Why? Sir, since it will oppose the change of the current and it will reduce the ripple into the current. What should be the value of then inductor? High or low? Sir, it should be high, sir. Why? Sir, when as high as it will be, so it will oppose more current, more change of the current. So that's why we took, and sir, we can also calculate the minimum requirement of the inductor through the circuit parameters. If suppose there is a sudden change in current across the inductor, then what will happen? Sir, if there will be sudden change of the current, sir, then there will be a impulse of the voltage which will present across the circuit, sir. How we can avoid this in filter circuit? Sir, we should design the circuit in such a way so that the voltage transient, so that sir this impulse don't occur, sir. Impulse don't occur. You heard about HVDC line, Yes, sir. right? What are the applications of this? What are the advantages? Sir, in long transmission lines, sir, when the length of the line is more than 400 kilometer, sir, then we prefer HVDC line, sir, as it is more economical. Like, sir, it needs less conductor, and also, sir, it don't have the phenomena of corona, and also, sir, as in HVDC system there is no concept of reactive power, so sir, losses and voltage drop across the line, these are reduced, sir. And we are using bleeder resistance. You heard about bleeder resistance? No, sir. RB? No. No idea? Sir. Okay, sir. Okay, sir. Alright, Nitish. So you have completed your graduation in 2022. Yes. So what you have been doing after that? Sir, after that I am preparing for the engineering services. So this is your first attempt, or you also attempted last year? Sir, this is my first attempt. So in final year you did not appear? No, sir. So why? Then what were your plans till final year? Sir, till that I was not much prepared about this exam. That's why I didn't attempt. Did you appear for any placement? Yes, sir, I fit into the placement. But sir, my motto was not to take the job, sir. You got selected in placement? No, sir, since I was not. But at least in final year you could have tried if your motto was going to this only. So final year में आप बैठे भी नहीं exam में, why so? Sir, since Whether qualifying or not, forget that is a later stage. Yes, sir. Sir, many core subjects was not prepared at that Still time. you can give it a try. Anyways, not attempting means you are not going to qualify. If you attempt, you will get, maybe something better would have been there this year. How much you are expecting in pre and mains? Sir, marks. Sir,
Acha, forget. Do you think it could have been improved if you attempted last year? That's my question. Sir, as I was not attempted, so I. Or were you not aware about the exam? No, sir, I was aware about the exam, but since I was not prepared. Chalo. So this time you just took a drop and prepared for it. Yes. Can you tell me the significance of row of zero in Routh-Hurwitz? Sir, when there is a one row is zero, that means sir poles will be symmetric about the origin. So either it will be on the g omega axis or it will be on the left and right half of the S plane. So it left will and right half where? means it will be symmetric about the origin. Okay. So when does this row of zero occur? Sir, when roots will be symmetric about the origin, sir. Suppose I give you some information about the frequency response of a system. Yes. Okay, if you want, you can write down. I give you just two frequencies. Yes. Okay, 0.01 and 0.02 radian per second. Okay, write down two frequencies. 0.01 and next is 0.02. Okay, the gain of the system at these two frequencies is minus 10.2 dB, minus 10.3 dB. This is the information given. Yes. Can you tell me the number of poles, number of open loop poles at origin by this much information? Yes. Or what is the approach you are applying? At least tell me that. Sir, through the body plot, as sir frequency is shifted by 1 octave. So sir, the phase shift should, sir, magnitude change in the magnitude should be 6 dB, but it is sir 0.1 dB. So sir, accordingly we will calculate the how much. So what do you guess? I mean, what is the change in magnitude? Sir, in magnitude, sir, there is a change of 0.1 dB. 0.1, and you are comparing it to 6 dB. Yes. 6 dB per octave, right? Yes. So isn't it very, very small? So what can you approximate? The change in magnitude is almost negligible. Yes, sir. So what can you approximate? Think you are drawing the body plot. Forget formula. Don't go to the formula. Think you are sketching the body plot. Yes. How will this body plot appear? Will it not look like flat? Yes, sir. Because the change in magnitude is very small. So if it looks like flat, what can you conclude then? Like, sir, pole will not be there on the That's chip. what. Okay. You heard about PID controllers? Yes, sir. Tell me their applications. Sir, PID controllers used to increase the stability and also to get the more accuracy. So application, industry. Yes, sir. PID controller used in the thermal power plant Okay. at the boiler and to. What it will do there? Sir, it increase the accuracy like, sir, at some. I mean, how? What will be the input parameter it will take? How it is going to control? Sir, it can be used at different places. Like, sir, when we use it at boiler, then it will sense the temperature, and accordingly, like, sir, it is measuring the temperature of the steam. So, sir, accordingly, it will sense and give the command to the boiler, like how much steam, how much more steam it should be put into the turbine. Can you elaborate this PID? Sir, basically, sir, the P controller, it either increase the steam. Elaborate. Tell me the full form of this. Sir, proportional controller, integral controller, and sir, differential controller. Okay. Can I use that integral controller alone? Sir, no, sir. Why? Since it increase the order of the system. Can I use a D controller alone? Sir, we cannot use any single controller alone. We should not use a single controller alone. Sir, since one controller
at a time it controls one parameter, like either it will control the steady state parameter or it will control the sir transient parameter. So what parameter P will control? Sir, P mainly deals with the sir transient parameter, like sir P, sir, that deals with the accuracy, that is steady state error. So That deals is- means it does what? It does good or bad to it? Sir, that is good, but at a time it will either control the stability or it will control the accuracy. Okay. Sir, we have to compromise with one parameter. Okay. Have you any time cooked food? Yes. Anytime? Yes, sir. Or tea, Maggie, something? Yes, sir. I'll ask you a simple question here. You must be knowing the different methods of cooking also. Yes. Okay. Let's do one thing. Write down. Yes. Okay. I give you two types of utensils. One is aluminium, okay, and one is steel. Yes. Okay, and three types of elements. Okay. Gas, induction cooktop, microwave oven. Okay. Tell me one by one. Okay. First, let's start with aluminium. Okay. In which of this aluminium utensil, if I use, the food will be cooked or not cooked? Sir, aluminum, sir, it will be good for the induction. Okay. Yes, sir. And sir, steel for the gas. Okay. Sure. Steel, can you use it in induction cooktop? Aluminium, can you use it in induction cooktop? Sir, like steel is a magnetic material. So, sir, sorry, I think it will be good when we use it for the induction cooker. Why? Sir, since it will induce the induced EMF into the steel and there will be flow of the eddy current, Okay. and through that we. And what about steel inside microwave oven? Sir, sir, microwave oven works on the principle of the microwaves. It use the heat of that wave. So, sir, I don't think like steel will should prefer Why for not? the mic. Try to maybe guess. Sir, microwave will not be able to produce induced EMF into the steel. Induced EMF. Just now told it's going to be on the radiation. Yes, The sir. waves. Yes, sir. Sir, as induction cooker, it works on the principle of the induced EMF at heat generated by. Achha, what about aluminium inside microwave? Sir, as aluminium, sir, it is a conductor. So, sir, Achha, I'll tell you. yes, Aluminium and steel both will not work inside microwave. Okay. yes, Okay. Even if you try, the food is rarely cooked. Okay. But what type of material will work? Have you used microwave sometimes? Have seen somebody Yes. using it? yes. Suppose you want to just warm the food, forget about cooking. Yes. What type of material will you use inside the microwave? So, those material who will allow this. Tell me the name of material. Simple. You are having a microwave inside, just in front of you. You're going to Yes. warm the food. What type of utensil will you search in front of you? Maybe, sir. Steel, aluminium, plastic, glass. What it is? Sir, Okay, no problem. Okay, sir. Nitish, yes, sir. what is the significance of Maurya in your name? Maurya. Sir, it is, sir, taken from the Maurya dynasty. Sir, it was established by Chandragupta Maurya in 320 BC. Sir. Okay. Sir, the name Maurya is taken from there. Okay. That's great. And so you discussed something about solar panel, right? Yes. What is the main element in solar panel? Sir, solar panel has, sir, PV cells, and PV cells connected into the module. Then that module connected into the parallel and they make the solar array. And after that we have, sir, charging controller which is connected through the solar panel. And after that either we can have the batteries to store that energy, either we can use directly to the DC load, or we can send this electricity to the inverter, and then after we can use for the AC loads. Okay. In our farms, Yes, if I use photovoltaic cell, PV cell, yes, sir. which type of motor I should use? Induction or DC?
Practically, as of now. Sir, we can use both, sir. It will depends on the arrangement through which we are taking the power from the solar panels. Like if we will use the inverters, then we can use the induction motor. Practically now, people using induction or DC? Sir, that is DC motor. DC Since motor. sir, having inverter, it will increase the cost of the system. But DC motor is too costly. Sir, that is also one factor, sir. Okay. Anyway, we came to DC. DC series motor Yes. is designed for AC also. Right? We call it as universal Yes. motor or whatever Yes. it may be. DC series motor is redesigned for AC, but DC shunt motor we did not. Yes. Why? Sir, the as torque in the DC series motor is proportional to the square of the current. So, sir, it don't depends on the direction of the current. But in case of the shunt motor, torque is proportional to the current only. So it depends on the direction of the current. That's why we cannot use this in sir AC supply. Can you draw DC shunt motor? Just a diagram. Yes. Okay. Now on the top terminal keep plus, remaining terminal minus. Yes. So draw current directions for armature and field. Sir, for the Armature motor. and field. Sir, for the motor. Current directions. Okay. Now change polarities. Plus minus to minus plus. Yes, sir. Then draw current directions of armature and field. Now, Yeah. in order to change the direction of rotation, Yes, sir. either field or armature, not both. Yes. But in this case, both armature and field current directions are reversed. Yes, sir. So in that case, torque will be developed in the same direction, Yes. right? Yes. So torque will be developed in the same direction, means DC shunt motor, if you connect with AC, it will rotate in the same direction, right? No, sir, but the direction of the torque, since this polarity will be changed in 10 It is milliseconds. not being changed, see. Sir, for the Armature current, field current. yes, Okay. Nitish, armature current, field current. yes, Means if you change either armature current or field current directions, rotation will be changed. yes, sir. But if you change both, The rotation of the direction will not change. not same, right? Yes. So it will rotate in the same direction. Yes, sir. Or like DC series motor. DC series motor. Keep plus minus. Field current, armature current directions. Yes. Field current, armature current. Yes. Now interchange the polarities. Field and armature. Yes. Both are getting changed. So Yes. that's why it is rotating in the same direction. Yes. Now my fundamental question is, DC series motor is redesigned for AC. Why not DC shunt motor? So when we write the torque equation, so I don't want funny equations and all, like you can express. DC shunt motor actually we can design for AC, no issues. But why don't we design? Actually, we did not design. yes, Why? sir, flux in case of DC series motor, it is proportional to the armature current only, and sir, in case of this, Forget about torque equation. Will it rotate in the same direction or not? sir, when we change the polarity, sir, it will rotate into the same direction in Right. case of DC shunt. So that means that if you supply AC also, DC shunt motor will work. But sir, the torque which will produce on the armature, that will be pulsating in nature. If it is rotating in the same direction, Nitish,
Sir, arc during the developed rotation. in the same direction. T is directly proportional to pi Ia. Yes, sir. So pi Ia. Yes, sir. Armature current, field current. Yes, sir. If both are in the same direction, even if you exchange, Yes. what we say, interchange polarities, then for AC also it should work. But sir, the flux and the current itself, it is changing in the nature. So Then you are saying DC shunt motor will not start if you supply AC. yes, sir. Hmm? Yes. Fine. Okay, for example, you are designing a filter, maybe band pass, band register, whatever it may be, Yes, sir. by using chip design, VLSI chip. So you can design it either with inductor or capacitor. In both ways we can do. Yes. Do you design with inductor or capacitor, or why? Sir, be designed with the help of the capacitor, sir. Why? Sir, since through across the capacitor we can take the constant voltage, but sir, across the inductor, sir, voltage is changing with the time. Like Forget about voltage, current and all. yes, You are designing a, for example, low pass filter. yes, sir. In the design of low pass filter, you can do it either by inductance or capacitance. Yes, sir. Okay. You are about to design at chip level, VLSI chip. Do you design with inductor or capacitor? Sir, with the help of capacitor, sir. Why? Sir, when we see from the transfer function, from the transfer function, then sir, capacitance provide one pole, and sir, but that inductor don't provide the pole, sir. And during the design of the low pass filter, so sir, when pole will be there, so it will work like a low pass filter. So when we use the inductor, so sir, in that case it will not be able to work as a low pass filter. When we see, sir, from from the transfer function. Yes. So you are saying that with inductor only, if it is possible, with capacitor it will not be possible. Or with capacitor only, if it is possible, with inductor it is not possible. Sir, Are you saying that? what I have seen, sir, mainly capacitor is used. By reason. Sir, So you since said some poles, it's okay. It's Yes. okay. In our machines, yes, in transformer, there is one transformer which will convert 2 phase into 3 phase or 3 phase into 2 phase. What is the name of it? sir, we do it through the Scott connections. With SCART connection, can we produce 6 phase? Sorry, sir. Can we produce 6 phase rather than 3 phase? Yes, sir. Can we produce 6 phase? Sir, in that case, we have two setup of the Scott connection, and we get two phase supply at the output, sir. Okay. Just give us a couple of minutes, and after that we'll call you for the feedback. Okay. Thank you. रिलैक्स हो जाओ. कैसा हुआ, आपको क्या लगता है? सर, मैं कुछ और बेटर कर सकता था. काफ़ी चीज़ें मुझे आती थी पर मैं एक्सप्रेस नहीं कर पाया. आपको एक्सप्रेसिव तो होना पड़ेगा ना. वो 20 मिनट्स में आपको वो 90 मार्क्स भी दे सकता है, 130 140 भी दे सकता है, 60 भी जा सकता है. हाँ. मतलब ठीक है ना, ऑन एन एवरेज आपको देंगे. अगर कुछ आपने अगर जैसे जिस तरीके से ट्राई किया ना, वो ब्लफ तो नहीं किया. आपको क्या लगता है? जी सर. ब्लफ आपने जबरदस्ती कोशिश तो नहीं की कि चलो घुमा दिया जाए. आप खुद सोच के बताओ. ये तो एकदम ओपन, ये तो यूपीएससी में हो नहीं. आप जी सर. अपना एक्सपीरियंस बताओ. सर, सर आपने क्या ट्राई किया है सर के क्वेश्चन में, मेरे क्वेश्चन में या उनके क्वेश्चन नहीं में? सर, मैंने अपनी तरफ से ऑनेस्ट मैं रहा हूँ. अच्छा. ओके. देखो, आपका वॉल्यूम कम है और वहाँ जी. पे यूपीएससी में इससे भी ज़्यादा डिस्टेंस होगी, जी सर. तो आपको वॉल्यूम बढ़ाना पड़ेगा, एक्सप्रेसिव होना पड़ेगा. अभी ऐसा लग रहा था कि हम सब क्वेश्चन पूछ रहे हैं और आप ऐसा लग रहा था कि रोबोट से पूछ रहे हैं, वो कुछ बता जी रहे हैं सर, लग ना. रहा था. रोबोट का भी वॉल्यूम थोड़ा ज़्यादा होता है. जी सर. दूसरा, ये तो मैं एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकता कि एनआईटी का लड़का उससे पूछ रहे हैं कि चॉइस कैसे फिल करी. तो मान लो कि किसी क्वेश्चन के मल्टीपल रीजंस हैं, तो आपको फर्स्ट रीजन कौन सा देना है, दैट इज प्राइमरी, है ना. आपका थर्ड या फोर्थ ऑप्शन हो सकता है या थर्ड या फोर्थ फैक्टर हो सकता है कि मैंने सीनियर से पूछा. फर्स्ट फैक्टर शुड बी योर फैक्टर. आपका उस डिपार्टमेंट में आपको पसंद है या जो भी और चीजें. फर्स्ट फैक्टर आप ये नहीं बोल सकते हो कि मैंने अपने सीनियर से पूछा.
जी कि सर। वो सीनियर ने जो कहा वो कर लिया, है ना। तो हाँ, आप फर्स्ट फैक्टर आपका अपना चॉइस होना चाहिए, जी उसके बाद आप किसी से कंसल्ट कर सकते हो। आप सीनियर की चॉइस से आप ये फिल नहीं कर सकते हो एट एनी केस। इनफैक्ट आप सीनियर छोड़ो, आप अपने फैमिली में या अपने भाई या अपने ब्रदर भी आपको इंजीनियरिंग सर्विस में, आप उसके चॉइस से भी अपना चॉइस नहीं कर सकते हो। दैट मे बी अ फैक्टर बट नॉट द प्राइमरी फैक्टर, यस सर। है ना। अब कॉन्ट्रैक्टर ए आपको पैसे दे रहा है और लेकिन उसका क्वालिटी भी सबसे अच्छा था, जी तो आपको ऐसे उसका आंसर बोलना है कि भाई मैं उससे पैसे नहीं लूंगा, माइट बी फॉर दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट वो अच्छा क्वालिटी दे दे, लेकिन मेरे को लॉन्ग रन में अपने सिस्टम को आगे लेके जाना है, तो मेरे को एक सस्टेनेबल मॉडल, एक ट्रांसपेरेंट मॉडल बनाना पड़ेगा। और अगर वो काम करने के लिए इतना तैयार है तो ठीक है, ही इज गिविंग द बेस्ट क्वालिटी, देन विदाउट डोनेशन वो मेरे को वो काम करके दे। हाँ, वो कहेगा नहीं मेरे से ही लो और मेरे से गिफ्ट लेना भी जरूरी है, तो मैं मना करूंगा, माइट बी काम रुक जाएगा, मैं लो क्वालिटी भी यूज नहीं करूंगा, बट टू मेक माय मॉडल सस्टेनेबल और टू मेक माय सिस्टम सस्टेनेबल लॉन्ग टर्म के लिए मेरे को ये, हाँ फॉर एक हफ्ते 2 हफ्ते 1 महीने के लिए मेरा काम रुक जाएगा, पर मेरे को लॉन्ग टर्म में एक फिक्स मॉडल मिल जाएगा और वो बार बार मेरे को ऐसा फिर नहीं कहेगा। जी ठीक है। बाकी कभी कभी आप एक ही क्वेश्चन में 4-5 बार सर बोल देते हो। सर आपसे कुछ पूछ रहे थे ना, तो आपने सर, फिर थोड़ी देर बाद फिर से सर, थोड़ी देर बाद सर, क्योंकि आप शायद उस समय पे आंसर सोच रहे हो या कंफर्टेबल नहीं हो ना। वॉल्यूम मेरा हुआ कैसा आ रहा है आपको? सुनने में जोर देना पड़ रहा है कि इजीली सुनाई दे रहा है? बहुत इजीली सर। तो ऐसे ही आपका भी आवाज वहां पे होना चाहिए कि इजीली उसको सुनाई दे दे। जी सर। ठीक है। और वॉल्यूम इंक्रीज करना है, सीनियर की चॉइस नहीं बताना है भाई, आपका चॉइस होना चाहिए ना। जी सर। ठीक है। मतलब मैं ये बोलना चाह रहा था कि सर मैंने उनसे भी कंसल्ट किया जिनको इसके बारे में हाँ। इंफॉर्मेशन थी। उनसे भी कंसल्ट किया, तो मैं इसको तो गलत बोल ही नहीं रहा, मैं कह रहा दिस शुड बी द थर्ड और फोर्थ जी। फैक्टर। अब आप किसी भी क्वेश्चन के जिसमें 5 फैक्टर हैं, तो आप सबसे पहले प्राइमरी फैक्टर से स्टार्ट करोगे ना, जी सर। उसके बाद आप आगे जाओगे। और देखो, आप ऐसे बच्चे लिख देते हैं वॉचिंग प्लेइंग क्रिकेट, है ना। 70% इंडिया में बच्चे क्रिकेट ही खेलते हैं। जी फुटबॉल हॉकी तो 5%, 6%, 2%, टेबल टेनिस 1% ऐसा खेलते हैं। लेकिन आप वहां पे आपसे क्रिकेट में क्या पूछेंगे? बैटिंग अच्छी लगती है, बॉलिंग अच्छी लगती है, नो विराट कोहली अच्छा है, रोहित शर्मा अच्छा है, तो वो आपसे यही स्नीकोमीटर, हॉट स्पॉट, पिंक बॉल, स्विंग, यही सब चीजें पूछेंगे। ठीक है। यस सर। बाकी सर लोग आपको बताएंगे। आपका जैसे मैंने कहा ना, आप डायरी लिख रहे हैं ना, और आपने खुद ही बोला है कि डायरी लिखने से इंफॉर्मेशन मतलब लेने में वो होता है, राइट। तो बता दो आपको, मैं पहले इंफॉर्मेशन लेने के लिए ना आपको इनफाइनाइट इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी होती है, वो तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। आपने जो पहला ही रिसोर्स बताया, जैसा सर ने कहा कि मैंने अपने फ्रेंड से लिया, अगर इसको ना, अभी कब है आपका इंटरव्यू? 17 अक्टूबर। 17 अक्टूबर में सफिशिएंट टाइम है। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता दूं कि जब मैं भी था ना, तो मुझे फील नहीं आ रहा था। तो मैंने जहाँ पे जो भी इंजीनियरिंग सर्विसेज में ऑफिसर्स थे ना, उनसे जाकर मिला उनके ऑफिस में, राइट। और उनके ऑफिस में गया, अपना आई कार्ड भेजो वहाँ पे कार्ड कि सर मैं ES का इंटरव्यू देना है मुझे, क्या मुझे आप अपॉइंटमेंट देंगे? आप अपॉइंटमेंट लो, और जितने टॉप मोस्ट ऑफिसर से हो सकते ऊपर, तो उससे आपको ना फील आएगा, उससे आपको अथॉरिटी आएगी, आपके आंसर में वजन पड़ेगा कि वाई यू वांट टू जॉइन ES। ठीक है, अभी आपने उतना प्रॉपर उसका जवाब नहीं दिया, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा ना, जितनी भी लाइंस आपने लिखी, फॉर एग्जांपल पिन कोड नंबर, जैसे आपका फ़ोन नंबर बड़ा फैंसी लग रहा है, तो क्या आप शौक रखते हैं क्या इसका? ये आपको बाय डिफ़ॉल्ट मिल गया कि आपने इसके लिए पैसे पे किए हैं? सर बाय डिफ़ॉल्ट ही बाय डिफ़ॉल्ट मिल गया, बड़ो किस्मत अच्छी है। तो ऐसे मतलब कहने का मतलब है कि ऐसे हर पॉइंट्स पर 4-4 लाइन आप बना लीजिए, कहीं भी आपको वो दिखेगा कि ये थोड़ा सा अलग है, वहाँ पे आपसे क्वेश्चन बन जाएंगे। तभी आप प्रिपेयर नहीं थोड़ा, है ना। तो हर लाइन पे 4-4 लाइन अपना देखो, अपने हिसाब से कैसे जवाब दोगे। अभी आपने जैसे ही सोलर पैनल ये बोला, मेरे आंसर में मैंने जब आपसे पूछा था, तो आपने कहा कि सोलर पैनल, तो सर ने जैसे कैच कर लिया। सर ने क्वेश्चन किस पर पूछा? सोलर पैनल पे। ये क्वेश्चन आपने फीड किया ना, आपने हमारे दिमाग में डाला, तो सेम वहाँ भी होगा। इसलिए जो भी आंसर दे रहे हो, वही चीज़ थोड़ा सोच के बोलना जिसके बारे में आप बहुत अच्छे से डिटेल में जानते हो, राइट। और ये फॉर्मर है, ये इंडिया की जो मेन इकोनॉमी वो है वहाँ, तो आप इसको जस्टिफाई करो, कैसे हेल्प कर सकते हो। ये भी हो सकता है कि आपकी जॉब ना मिले, तो आपके पूरे टेक्निकल नॉलेज का यूज़ करके आप कैसे इसको इम्प्रूव करोगे। अगर आप इसको बहुत अच्छे से जस्टिफाई करते हो, इससे ये मेरे से भी पूछा गया था, मेरे फादर ग्रेन मर्चेंट थे, तो उनसे पूछा गया अगर आपकी जॉब नहीं लगेगी तो आप अपने फादर के, बिल्कुल मुझसे तो पूछा गया तुम आपको सर मतलब ऐसा नहीं लगता कि आप बहुत नीचे? मैंने कहा इसमें क्या, अर्निंग तो हो रही है ना वहाँ पर, इस तरीके से भी क्वेश्चन आएंगे। तो आप इसको बहुत अच्छे से जस्टिफाई करो, और जो भी आपने बचपन से इसको देखा है ना, क्या क्या चैलेंजेस है, उसको बहुत अच्छे से बताइए, और उसका सॉल्यूशन बहुत अच्छा निकाल के रखो, तो ये आपके पूरे फेवर में चला जाएगा ये पॉइंट। ठीक है। और कितने एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट हो रहे हैं, अभी हमने G20 से रिलेट नहीं किया, G20 में एग्रीकल्चर पर बेस्ड जितने भी क्वेश्चन है वो तैयार करना।
ठीक है। जी। देखो अभी आपके पास है 1 मंथ पूरा, जी। तो मेरे को जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट लगता है टेक्निकली आपको थोड़ा सा और चीज़ों को ब्रश अप कर लेना चाहिए, और जो नहीं आता ठीक है उसको आप एक्सक्यूज ले सकते हो। ठीक है, जैसे वो आप थोड़ा बहुत इंडक्शन और माइक्रोवेव वाले में कंफ्यूज हो रहे थे, तो रादर देन अननेसेसरी, या देखो जितना अंदर जाओगे उतना इंटरव्यूअर को आप चांस दोगे और आपके टाइम को किल करने का, है ना। ये आप ही को फ्रेम करना है। ये 20-30 मिनट जितना भी वहाँ पे इंटरव्यू चलता है, अगर उसमें से आप एक ऐसी जगह टाइम स्पेंड कर दोगे जो आपका जोन नहीं है, तो वो टाइम आपके लिए वापस नहीं आने वाला। ठीक है, और इंटरव्यू एक लिमिट तक ही होगा, तो बेटर यूटिलाइज दैट 5-7 मिनट्स इनटू अ फेवरेबल एरिया। ठीक है, तो अगर आपको लग रहा था कि आप कॉन्फिडेंट नहीं हो एल्यूमिनियम एंड स्टील वाले चीज के लिए, तो आप वहाँ पे बोल सकते हो सॉरी सर नॉट अवेयर अबाउट दिस। ठीक है, लेकिन सर अगर उसमें कुछ ट्राई कर सको तो क्या थोड़ा, अगर देखो 10 सेकंड में सॉरी बोलो तो ज्यादा अच्छा है। ट्राई करने का मतलब है ट्राई भी तब कि आपको लग रहा है कि आपको आता है, एकदम से रिकॉल नहीं हुआ। लेकिन आपको अगर जैसे एल्यूमिनियम इंडक्शन पे नहीं काम करेगा, आपने मतलब करेगा पर उसमें एफिशिएंसी नहीं आएगी। मोस्टली स्टील इज सुटेबल। माइक्रोवेव के अंदर तो आप जा ही नहीं पा रहे थे, तो वहां आप एक्सक्यूज ले लो जहां पे आप जा ही नहीं पा रहे हो। हाँ लगता है आ सकता है, थोड़ा 10 सेकंड का टाइम लगेगा, वहां आप फिर भी ट्राई करो, बट जहां आप कॉन्फिडेंट ही नहीं हो वहां तो एटलीस्ट ट्राई मत करो, वहां आप एक्सक्यूज ले सकते हो, ये ज्यादा है। बाकी आपको लग रहा है जो एरिया भूल गए, से कंट्रोल आपने फेवरेट में बोला था, लेकिन उतने सैटिस्फैक्टरी आंसर नहीं थे। ठीक था, मतलब मैं बहुत बुरा भी नहीं बोलूंगा। तो जो आपने 3-4 सब्जेक्ट अपने फेवरेट बोले, एटलीस्ट उनको तो अच्छे से आप प्रिपेयर करके ही जाओ, प्रोवाइडेड यू हैव टाइम तो यू कैन डू दैट। ठीक है, और जो सर ने भी वो क्वेश्चन पूछा था, सर ने ऑलरेडी आपको बताया मनी बाय, उसका आंसर भी क्या हो सकता है सर ने बताया, लेकिन उसमें आप एक चीज बार बार इंसिस्ट कर रहे थे कि वो ऐसा करेगा ही क्यों। उसकी बात नहीं कर रहे ना, उसने कर दिया, उसने अपनी सिक्योरिटी के लिए कर दिया कि यार मैं अच्छा काम करता हूँ तब भी मैं पैसा दूंगा, मेरे को तो ये प्रोजेक्ट चाहिए। आपने 2-3 बार एक ही चीज बोली कि वो ऐसा करेगा ही नहीं। उसकी बात नहीं कर रहे हैं, आपकी बात कर रहे हैं कि आप क्या करोगे। उसने तो क्वालिटी भी अच्छी दे ली और उसने पैसा देना है, उसने सोच लिया है, आप क्या करोगे, आप उसको डिफाइन करो। आप रिकॉल करना, आपने 2-3 बार एक ही चीज बोले कि वो ऐसा करेगा ही क्यों। तो यू डिफाइन योर पर्सनालिटी नॉट द अदर वंस। उसने ऐसा कर दिया, अब आप क्या बिल्कुल। आपका ना वो क्वेश्चन, आपके जो जनरल स्टडीज में लास्ट टॉपिक थे ना एथिक्स, यस सर, था ना, है ना सर अभी? यस सर। तो एथिक्स में तो ये सब क्वेश्चंस है ना, जो सर ने पूछा है कि जब अगर आपके पास ऐसी सिचुएशन आती है तो आप उसको हैंडल कैसे करोगे। यस, तो उससे रिलेट करके आप अगर आंसर देते हो, सब्जेक्ट से रिलेट करके भी अगर आप आंसर दे रहे हो, क्योंकि वो पूरा पढ़ा है आपने कि क्या क्या है, तो बस उसको ऑब्जेक्टिव तक मत रखो। जी, उनको भी पता है सिलेबस में ये है टॉपिक, वो दे के ना। ये भी नया इंट्रोड्यूस हुआ है पिछले 4-5 सालों से, तो एथिक्स पर रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जी। You have to stand up, man. Stand on point. Okay. For example, if I ask, is this better or is this better? What you are trying to say is, you are sitting in the middle. You are not standing on point. Rather than that, you are beating around the bush. Getting my point? Yeah. Okay. So, otherwise, if you are trying to discuss in this way, your mind is the other way. You are actually, though you are saying one point is good, and your mind is stopped with the other way. Okay. And one small suggestion, Nitish ji, if you are beating around the bush, you are killing your own time in the interview. Okay. Because of that, it will not, because already interviewers panel know. Getting my point, right? So you have to stand on a point. For example, if you are confused, it's okay. If you kill your time there, as you are confused. Getting my point, right? Yes. So you should not kill time there, and you should not beat around the bush. Because you are not bluffing, but you are beating around the bush. Even though you know you don't know, you are not accepting. You are trying to say this side also, this side also. Getting my point, right? Yes. Keep your mind open. Very all the best. आपका कोई क्वेश्चन, कोई डाउट कि ऐसे करना है कि ऐसे करना है? सर जो आपने पूछा था इनकम के बारे में, सर ऐसे क्वेश्चंस को कैसे हैंडल करना है? देखो जनरली तो आपका आपने टैग कर दिया, यस सर, उनके पास चला गया, ठीक है। तो अब आपको ये बोलना है कि सर बिल्कुल जो 50,000 आपका एग्रीकल्चर से हमारा पैसा आता है, उसमें मेरी माताजी का भी इक्वल भागीदार है। और उस समय पे जब हमने रजिस्ट्रेशन कराया था तो मैं बहुत छोटा था, है ना, और मेरे पिताजी पढ़े लिखे नहीं हैं, तो उन्होंने ऐसा करा दिया। लेकिन अब क्योंकि मैं पढ़ चुका हूँ और मेरे को चीज़ ध्यान है, तो मैं इसको अपडेट करा लूँगा। करा दूंगा। अब ये मत बोलना कि फॉर्म भर दिया है,
इसको अपडेट कराने का, फिर वो फॉर्म में कुछ पूछ देंगे, फिर आपने भरा नहीं है तो फिर पकड़ झूठ तो जाओगे, बिल्कुल है ना। तो बोल देना कि मैं इसको अपडेट कराऊंगा, मैं अपनी पढ़ाई में था, भोपाल में था, तो मैं इसको जाके उसको अपडेट करा दूँ। ओके ठीक है जी। और सर वो सर जैसे लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड क्वेश्चंस, लॉ एंड ऑर्डर से ये है ना कि वो सब किसी को एनकाउंटर करना हो सकता है, मेरे को भी अच्छा लगता हो, आपको भी लगता हो या नहीं लगता हो, लेकिन आपको कभी भी इंटरव्यू में जो लॉ एंड ऑर्डर के जो नियम है उसी के हिसाब से चलना है। एनकाउंटर उसके नियम में नहीं है तो नहीं करना है। किसी भी पार्टी का आपको कभी भी सपोर्ट नहीं करना है। आप कहोगे कि भैया बीजेपी तो बहुत अच्छा ही अच्छा, हो सकता है इंटरव्यूअर के चाचा एमएलए हो कांग्रेस में, है ना। तो आपको किसी भी पार्टी, किसी भी धर्म, किसी भी जाति के लिए हमेशा न्यूट्रल रहना है। किसी का भी बहुत ज्यादा फेवर या बहुत ज्यादा अगेंस्ट आपको नहीं करना है। ठीक है, आपको वो सारी चीजें में डिप्लोमेटिक न्यूट्रल रहना है, क्योंकि आपको नहीं पता कि इंटरव्यू का उसमें क्या व्यू है। और जनरली इनकी एज ज्यादा रहती है, 58 साल, 60 साल, 62 साल ऐसे रहती है, तो उस एज में वो और ज्यादा बायस हो जाते हैं कि नहीं मोदी अच्छा है या मोदी बेकार है ना। हमारी एज में आप मेरे से पूछोगे सर से पूछो, ठीक है जो भी है ठीक है, वो वाली एज में वो नहीं अच्छा ही है या तो गंदा ही है, वो ज्यादा इंटरेस्ट उसको रहता है। तो आपको उसमें डिप्लोमेटिक करना है, क्योंकि आपको उसका चॉइस नहीं पता है जी, है ना। एनकाउंटर या कॉन्ट्रैक्ट वाला ये सब लॉन्ग टर्म में तभी बेनिफिट रहेगा अगर आप उसको प्रॉपर जो भी नियम है वैसे करने। यस ठीक है। अच्छा, दूसरा एक और क्वेश्चन मैंने पूछा कि आपसे पूछा था क्या कि नाम चेंज हो गया प्रयागराज इलाहाबाद, जी सर, है ना। तो उसमें जब आप स्टार्ट करो तो मैंने एक एग्जांपल दिया प्रयागराज इलाहाबाद, और फिर मैंने कहा ये सही है कि नहीं। तो आप स्टार्ट करते हुए ऐसा बोल सकते हैं सर, इन रीसेंट इयर्स यूपी हैज डन और द गवर्नमेंट हैज डन मेनी नेम्स लाइक प्रयागराज टू इलाहाबाद, फैजाबाद टू अयोध्या, और ऐसे एक दो एग्जांपल और भी दे सकते हो। तो उसको पता चलेगा कि आपकी नॉलेज तो अच्छी है। उसके बाद आप उसका रीजन दोगे तो उससे पता चलेगा कि आपकी ओपिनियन अच्छा है कि और सही समझ समझ पा रहे हो कि नहीं। उसका आंसर यस नो कुछ भी हो सकता है आपके हिसाब से ना। यस उसमें ऐसा नहीं है कि यस में आपको ज्यादा अप्रिशिएशन मिलेगा या नो में। आपको जो भी देना है उसका लॉजिकल आंसर देना है कि ऐसे ऐसे करके ऐसा हो सकता है। जैसे सर इस टाइप के क्वेश्चन में सर हो सकता है कि मैं किसी चीज़ के अगेंस्ट भी अगर अच्छे लॉजिक के साथ बोलूं कि ये चीज़ गलत है या ये चीज़ सही है, मतलब कुछ भी बोल सकता हूँ या थोड़ा सा न्यूट्रल रहना चाहिए? बहुत ज्यादा कभी भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट मत बोलना है। अगर इलाहाबाद को प्रयागराज कर दिया, नहीं सर ये तो नहीं होना चाहिए था, ये सब हिंदुत्व फैला रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, ऐसा नहीं बोलना है। नहीं सर, मतलब बहुत ज्यादा अगेंस्ट आपको नहीं बोलना है। जी सर, ठीक, अभी आपके पास टाइम है जी। और वॉइस पे थोड़ा और वर्कआउट करो। मतलब अभी फीडबैक के टाइम भी मैं वही ऑब्जर्व कर रहा हूँ, वॉइस अभी भी डल है, थोड़ा सा स्ट्रेस लगाना पड़ रहा है, वो कम होना चाहिए। जॉब चाहिए ही क्या? मैं बोल रहा हूँ जॉब चाहिए ही क्या आपको? मतलब जॉब के बिना नहीं चलेगा आपका काम? मतलब जीने मरने का प्रश्न हो गया क्या इंजीनियरिंग सर्विसेज? नहीं सर, मतलब जॉब नहीं हुआ तो फिर क्या दिक्कत है? इतनी अच्छी प्रोफाइल है, जॉब चाहिए क्यों? जॉब में पेमेंट ही क्या, नथिंग। ऐसा सोच के जाओ आप। जब आप ऐसा सोच के जाओगे ना तो अपने नेचुरल तरीके से बता पाओगे। जब आपको चाहिए ही ना तब उसके बाद ना आप डरने लगते हो। तो बिंदास जाओ और बिंदास दो इंटरव्यू। मेरे को बताओ, आपका कॉन्फिडेंस आपको क्या लगता है कि नहीं है? मतलब अभी मुझे और काम करना है अभी है कि नहीं है कॉन्फिडेंस? मतलब वैसे तो सर कॉन्फिडेंस है। कॉन्फिडेंस है जी सर, लेकिन यहाँ मैं सो जी सर सो नहीं कर पा रहा हूँ, उसी पे काम करना है तो लग नहीं पा रहा है। अगर एक बीटेक का बच्चा जो इंजीनियरिंग सर्विसेज में 213 या 220 बच्चे आपके इलेक्ट्रिकल सिलेक्ट हुए हैं, उसमें हजारों में से उतने आने के बाद, बीटेक एनआईटी से करने के बाद, गेट में अच्छा रैंक लाने के बाद भी कॉन्फिडेंस आप शो नहीं कर पा रहे हो, तो फिर मेरे को लगता है कि आप सिविल सर्विस भी क्लियर कर दोगे तब भी आप शो नहीं कर पाओगे कॉन्फिडेंस। तो फिर आप कभी एक अच्छे सिविल सर्वेंट बन ही नहीं पाओगे। सर कॉन्फिडेंस मतलब कैसे शो करूँ इसके लिए? कॉन्फिडेंस आप ऐसे शो करो कि आपका वॉल्यूम ऐसा होना चाहिए कि इजीली समझ पाए, एक्सप्रेसिव आप होने चाहिए। आपके आंसर सारे आंसर ऐसे में जा रहे हैं, ऐसे क्रिस गेल बैटिंग करता था ना, क्रिस गेल बैटिंग में जब चौका भी मारेगा, छक्के भी मारेगा या बीट भी होगा, ऐसे ही रहता था। बॉलिंग और फील्डिंग में एक्सप्रेशन आते थे उसके। बैटिंग में आपने कभी देखा उसने बैटिंग में कभी एक्सप्रेशन दिया है ना? तो आप क्रिस गेल की तरह हर आपका क्वेश्चन आता है नहीं आता है, आप एकदम एक ही टोन में हो, तो उससे लग ही नहीं रहा है कि आप कॉन्फिडेंस में हो। आप जितना एक्सप्रेशन दिखाओगे उतना आपका कॉन्फिडेंस दिखेगा। दैट एक्सप्रेशन शुड नॉट बी लाइक कोहली आल्सो, उतना भी नहीं दिखाना है। अच्छा, लास्ट ईयर आपने सच में अटेम्प्ट किया था या नहीं किया था इसका? ये आंसर भी थोड़ा सा मतलब मुझे सैटिस्फाइड नहीं लगा कि अटेम्प्ट ही नहीं किया। कई बार नहीं देते। एक्चुअली क्या होता है ना, अटेम्प्ट काउंट होता है। फर्स्ट इंटरव्यू में ना इंप्रेशन पड़ता है, फर्स्ट टाइम में आप यहाँ तक पहुँच गए। और कई लोगों को पता होता है कि अटेम्प्ट काउंट ही नहीं होते ना ईएस में।
आपको पता है ना कि अटेम्प्ट काउंट नहीं हाँ, होती ये इसमें तो नहीं होते हैं। मतलब एज काउंट होती है, लास्ट एज है, लेकिन आप जितनी बार भी दे दो। जी। तो कई बच्चे सर वो इसलिए भी नहीं देते कि चलो वो रियलिटी की बात नहीं, मतलब फर्स्ट उस टाइम टाइम सर प्रिपेयर नहीं था इसीलिए नहीं दिया। कोई बात नहीं, वो तो जस्टिफाइड है। और आप पहली बार में चौका छक्का मार सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ना। ये मत सोचो कि ये तो नहीं है ना पंचवर्षीय योजना। नो सर। हाँ, मतलब पहली बार में क्रैक करना है ना, जी तो अच्छे से करो। 17 अक्टूबर है आपकी डेट, जी यू हैव इनफ टाइम। ग्रुप बना लो यहाँ, राइट, जितने बच्चे हैं 1-2, और फिर आपस में भी मॉक इंटरव्यू लेते रहिए और बताइए फिर कैसे आपको वो बढ़ रहे हैं, इंक्रीज कैसा हो रहा है। ये आपका पहला मॉक था? पहला मौका सर। फर्स्ट मॉक। ठीक, आपको कुछ और पूछना है तो? नो ठीक। थैंक यू।